Hello everyone and welcome back to the next step part of transition metals. I've so far uploaded videos of 3 parts. If you have missed out, then go to the description box and you'll be getting the link of all the previous 3 videos of transition metals. Alright, and we now start off with the part 4 of this transition metals. But before I start, let me just tell you one thing, and that is that please do subscribe this channel so that you understand when that particular transition metal video is being uploaded, so it comes to you as quickly and as easily as possible. Alright, so with this we start. In today's video we are going to learn about one of the most unique property which is being shown by the transition metal, and yes, that is variable oxidation state. So we begin with the concept of variable oxidation state. I just write down OS. Now we are basically talking about the charges which are going to be shown by these transition metals, and variable means more than one. So when you talk about a transition metal showing one particular metal showing more than one different oxidation state, okay, and that is what is called as what? Variable oxidation state. एक ट्रांजिशन एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. ओके, अब ये क्यों दिखाता है, उसकी वजह क्या है, वो इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले when we talk about, I've already told you this in my previous videos, कि when you talk about the valence shell electronic configuration, we are going to consider 2 orbitals. One is going to be Ns and the other one is going to be N-1d. Why? उसका reason is because the energy difference between the two, that is delta E, is less, and because of that we are having electrons from the s orbital as well as N-1d orbital. So when the electrons are available from 2 orbitals for bonding purpose, and therefore they have an ability to show more number of oxidation states. More the number of electrons available for chemical bonding, more the number of oxidation states that are being shown. तो ये हो गया पहला रीजन. ओके, Ns और N-1d ऑर्बिटल ये हम लोग कंसीडर करते हैं इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के बारे में, जहां पर n का वैल्यू हो सकता है 4, 5, 6, 7 डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं. ओके, टोटल मैंने आपको पहले भी बताया था 4 ट्रांजिशन सीरीज है. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि 112 एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ, ओके, 112वां इलेक्ट्रॉन जब एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ, तब जाकर वो चौथी सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हुई. ओके, सो n कैन हैव दीज वैल्यूज एज 4, 5, 6 and 7. And therefore n-1, because the d orbital comes in the penultimate shell, okay, and therefore we consider the inner orbital, that is the d orbital. और ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का फासला है वो कम है, and therefore okay, I can have electrons from Ns as well as N-1d. And that's why it's very simple, and that is the electrons are available from both these particular orbitals, and therefore more number of electrons are available, और इसी वजह से दोस्तों more oxidation state can be shown by this particular elements. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सवाल है, I just write down in short T. ट्रांजिशन एलिमेंट्स all of them are metals. और जब दोस्तों हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो आपको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. ओके, ये तो सब बेसिक्स है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से. और इसीलिए हम मेटल्स को जोड़ते हैं किसके साथ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ. ओके, वी आर गोइंग टू एसोसिएट द मेटल्स विद व्हाट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज गोइंग टू बी हाई, और ये हाई होने के वजह से इट प्रोवाइड्स द सफिशिएंट एनर्जी. ओके, जितनी एनर्जी जरूरत है वो उपलब्ध है बिकॉज ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अब आपका सवाल ये होगा कि एनर्जी की जरूरत क्यों है? जी हाँ दोस्तों, जरूरत इसलिए है कि जब हम बात करते हैं अबाउट N-1d, हम बात करते हैं अबाउट Ns, और जब हम n की शेल की बात करते हैं तो एक और ऑर्बिटल के बारे में हमें चर्चा करनी होगी, एंड दैट इज Np, बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम शेल. So this oxidation potential, because it is high, it provides a sufficient energy so that the electrons from the N-1d as well as the Ns can be promoted to the vacant p orbital.
And as a result of which, a concept which you have heard very well in your lower classes, and that is hybridization, comes into picture. Okay, what is it? The hybridization comes into picture, and it is this particular phenomena also is a contributing factor for these elements to show variable oxidation state. Understood this? So this is what the intro part about this topic, variable oxidation state. इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस variable oxidation state के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ. जो आपको ज़रूरी है उतना ही मैं आपको explain करता हूँ, because this is more with respect to a student centric videos. Alright, so इस तरीके से मैं आपको वापस से recap दे देता हूँ. पहला बात है कि whenever we talk about transition elements in the valence shell electronic configuration, we consider ns and n minus of 1d orbital. Now because they have a lesser energy difference, okay, तो इसके वजह से हम उसको consider करते हैं. Next point क्या याद रखना है? Transition elements are all metals, and therefore they have a tendency to lose electrons, and therefore they undergo what? Oxidation, and therefore their oxidation potential is going to be what? High. Okay, of course there are exceptional cases as well. Okay, copper and silver. ओके वो एक्सेप्शनल केसेस है कि जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ओके, तो वो वहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस में जाता है. ओके, कॉपर में, सिल्वर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एनीवेज हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं. तो जनरली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी हाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट सफिशिएंट एनर्जी इज अवेलेबल फॉर व्हाट पर्पस? यस, फॉर द ns and the n minus of 1d electrons to be promoted to the vacant np orbital. और इसके वजह से क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होगा, so as a result of which we'll be getting more number of single electrons, and therefore those orbitals containing single electrons will be involving the hybridization concept, और ये एक concept भी contributory factor है for the variable oxidation state. Okay, I hope up to this much is very clear to all of you, my dear friends. Now my dear friends, I'm going to give you a better explanation about the oxidation state, okay, on the basis of a table, and that is with respect to only first transition elements. Okay, that is we are going to talk about scandium to copper. Of course, मैंने आपको पहले भी बोला है कि zinc is not a transition element. Yes, it's a d block element, but it's not a transition element. तो उसके बारे में भी मैं आपको एक यहाँ पर evidence दे देता हूँ. So now have a look at this particular table. Now table में हम लोग क्या consider करने वाले? First one is elements. Next is the valence shell electronic configuration, and the next column is we are going to talk about OS. दोस्तों जान ही गए होंगे कि OS का मतलब क्या होता है. जी हाँ, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो हम शुरू करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू ओनली एंड ओनली एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो जब हम पहला ट्रांजिशन सीरीज के पहले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? स्कैंडियम. उसके बाद वी गो फॉर टिटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, then manganese, then iron, then cobalt, then nickel, then copper, and of course zinc. यहाँ पर स्टार मार्क करके रखता हूँ because मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि it's somewhat a different element as compared to the rest of the elements. Okay, if you remember, I had passed on a statement as well that all d block elements are not transition elements, but yes, all transition elements are d block elements. तो ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. Okay, on the basis of oxidation state. Now when you know about the valence shell electronic configuration, if you can just recollect, what did I say about the two orbitals having less energy difference? Yes, it's going to be what? N minus of 1d and ns. Now here because it is a first transition series, so that means वो n का value कितना होगा? 4. और अगर n का value 4 है, so that means n minus of 1 is equal to 3. So that means we are going to talk about 4s as well as 3d. So we start with, we have 3D and we have 4S. Electronic configuration I've already explained you before as well. So 3D, 4S2, and this is 3D1 and 4S2. Now electrons are going to be progressively added to the d orbital. So as a result of which what we have is 3D2, 4S2, 3D3, 4S2, 3D. Hang on, याद आ रहा है? यहाँ पे कुछ difference है? Yes, 3D5 and 4S1 है. Okay, I have already explained you the reason why. 3D5 4S2, next is 3D6 4S2, next is 3D7 4S2,
Next we have is 3d8 4s2. Next is 3d9. No, it's 3d10 4s1, and then we have got 3d10 4s2. Alright, I've already explained you all these electronic configuration with specific reference to chromium as well as copper in my previous videos. Please go through it. Okay, the link is there in the description box. So now we go into the oxidation state. So we start with scandium. So scandium has got oxidation state as +2 and +3. This we have +2, +3, +4. We have +2, +3, +4 and +5. Next we have is for chromium, we have +1, +2, +3, +4, +5, +6. We have +2, +3, +4, +5, +6, +7. We have +2, +3, +4, +5 and +6. +2, +3. Nickel we have +2, +3. Copper we have +1, +2, and zinc we have +2. Okay, so these are the general oxidation states which are going to be observed for the various elements. Okay, now कुछ observations देखते हैं हम लोग from this particular table. Okay, number one observation is, okay, as the electron gets progressively added into the d orbital, I told you, okay, as the atomic number increases, so we divide this entire series into two halves now. Okay, तो ज़्यादा easy हो जाएगा when it comes to the comparison part. So I divide this into two halves. So one half is scandium, titanium, vanadium, chromium and manganese. This is the first half of the series, and then we go for the later half of the series. Okay, तो अच्छी तरीके से comparison हम कर पाएंगे. So when you consider the first half of the series, the electron gets progressively added into the d orbital. Okay, अब जैसे जैसे d ऑर्बिटल में ऐड होते जाएगा, आपको मालूम है ना हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जब तक अवेलेबल ऑर्बिटल्स है मेरे पास वेकेंट, तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा दोस्तों. और इस वजह से दोस्तों व्हाट विल हैपन इज कि द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सिंगल सिंगल सिंगल, और वो कहाँ तक जाएगा, 3d5 तक जाएगा. Okay, because in 3D, the maximum single electrons which is possible is 5, and you know this very well. Okay, I don't want to go much more detail into this. Okay, now that means the sixth electron, when we want to make sure that it gets arranged into the 3D orbital, that means I got only one option, and that is the electron should start pairing. समझ में आया? अगर छठा इलेक्ट्रॉन मुझे अरेंज करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, और वो क्या है कि पेयरिंग शुरू हो जाता है 3D ऑर्बिटल में. लेकिन फिलहाल उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे. हम पहले आपकी सीरीज की बात करते हैं, मतलब स्कैंडियम से मैंगनीज तक. तो आप देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस हिसाब से अगर आप इसके साथ उसको रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एंड दैट इज कि जैसे जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है फ्रॉम स्कैंडियम से मैंगनीज, उसी तरीके से द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग. देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था इन केस ऑफ स्कैंडियम +3. So as the number of single electron goes on increasing, the highest oxidation state of that element also goes on increasing. So from +3 we went into +4, then +5, and then +6, and then +7. इससे एक रिलेशन आता है दोस्तों, एंड दैट इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग. क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो वो उसका असर दिखाएगा ऑन व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट. So as the number of single electron goes on increasing in the first half of the series, the maximum oxidation state also increases. Okay, so ये तो था दोस्तों maximum oxidation state की बात. Minimum oxidation state की बात की जाए तो मैं आपको एक simple rule बता देता हूँ कि in this first transition series I'm talking about, please be very specific also my dear friends, and that is कि in this case the minimum oxidation state is nothing but equal to the total number of electron present in the 4s orbital. Okay, once again I repeat, the minimum oxidation state of this element is equal to the total number of electrons present in the s orbital. That is the minimum one. यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि when you talk about chromium and copper, okay, anomalous electronic configuration, it has got only one electron in the s orbital. So those two elements will have a minimum oxidation state as +1. जैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूँ वैसे आप अपनी नजरें रखिए टेबल के ऊपर, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो रिलेट हो रहा है कि नहीं. ये देखो क्रोमियम और कॉपर.
Okay, +1 oxidation state because of the presence of one electron which is present in the s orbital, and you know this why. Okay, I don't want to once again repeat that. ठीक है, ये हो गया फिर. Or otherwise, except all these elements, the other elements have got 2 electrons. Okay, so therefore in elements other than chromium and copper, the minimum oxidation state will be +2. Check it out. Okay, +2 everywhere. See this? समझा आप लोगों को? ये था minimum oxidation state, and I've also told you about the maximum oxidation state up to the first half of the series. Okay, I guess the concept is clear. अभी आप second half of the series में आइए. When you go into the second half of the series, what happens is the highest oxidation state goes on decreasing. Because मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है तो मेरे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग. So if the electrons start pairing up in the 3D orbital, so it is very clear that the number of single electrons decreases. And if the number of single electron decreases, the number of electrons available for bonding purpose also decreases. Okay, and as a result of which आप देख सकते हो कि maximum number of unpaired electrons कम हो जाने के वजह से इनका oxidation state में भी कमी आ रही है. Okay, now we take individual cases. Okay, और फिर मैं यहाँ पर भी आऊँगा. When you go into the individual cases, what happens is we start with scandium, +2 and the +3 oxidation state. Okay, when I talk about +3, okay, that means they are going to lose 3 electrons. So all these 3 electrons will be lost, and that means you come to a inert gas configuration. Okay, with atomic number 18, and you know this very well, it is argon. The inert gas is stable है, so that means the +3 state is going to be more stable. In chemistry में we always go for stability. एक ठहरावपन है दोस्तों chemistry का मतलब. Okay, we always go for stability, we always go for force of attraction, we always go for strength. ये हमारा priority है दोस्तों. So scandium में the +3 oxidation state is more stable as compared to the +2 state, and therefore scandium prefers to form salts, form compounds in the +3 state. जैसे SrCl3. Okay, ये जहाँ पर क्लोरीन का चार्ज तो आपको मालूम ही है, it is -1, so that means Sr will have a charge of what? +3. Okay, so this is one thing which I want to say. Okay, that is that +2 and +3 states are being seen, but then the +3 state results in a stable inert gas configuration, and therefore scandium prefers to form compounds more in the +3 state. Go to the next one, titanium, +2, +3 and +4. These are the 3 possible oxidation states. और उसमें भी हम लोग बोलेंगे कि +4 oxidation state will result in an inert gas configuration. इसलिए वो +4 तक जाता है. I give you the most simple example, and that is TiCl4. Okay, that is titanium tetrachloride. Okay, so उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं. और अगर आपको मालूम भी होगा that polymerization of alkenes, okay, जहाँ पर Ziegler-Natta catalyst का इस्तेमाल हुआ था, so वहाँ पर the titanium is going to be present over there. So that is going to be in the +4 state. Vanadium में there are going to be 5 electrons present in the valence shell. So as a result of which, what happens is there are possibilities of +2, +3, +4 and +5. Okay, ऐसे possible states हमें मिलेंगे. अब हम क्रोमियम के बारे में जाते हैं. क्रोमियम forms various compounds. पहला है +1. Okay, now जब +1 बनाएगा, so ये electron, the 4s electron will be removed. So what we have is 3d5. Now 3d5 contributes to a half-filled state, and therefore it is our presumption that because it is a half-filled state, it has to be stable, and therefore the +1 state has to be more common. But my dear friends, let me tell you is, chromium tries to avoid forming normal salts in the +1 state. Of course, its compounds with pyridine are much more known, but when it comes into the normal salts, it tries to avoid it. Okay? Now when you talk about +2, it's called as chromous salts. +2 salts को क्या बोलते हैं? Chromous salts. +3 को क्या बोलते हैं? Chromic salts. +2 is chromous, +3 is chromic. +4 और +5 जो है, that is comparatively unstable. और जब हम +6 के बारे में बात करते हैं, yes, it's going to be quite stable. Okay, it is going to be forming compounds. You have learned about this. Okay, potassium chromate, K2CrO4, potassium dichromate, that is K2Cr2O7, CrO2Cl2, that is called as chromium chloride, is one of the most confirmatory tests for the identification of chlorine in inorganic salts. Okay, so this is +6 state, जहाँ पर chromates, dichromates, chromium chloride, ऐसे compounds हमें मिलेंगे. Okay, now when you talk about the +6 state, +6 से it gets converted into a +3 state also very easily. Okay, so therefore what happens is कि अगर +6 to +3 हुआ है दोस्तों, so that means charge में कमी आई है. The decrease in the charge is called as reduction.
Okay, the decrease in the charge is called as what? Reduction. यानी क्रोमियम का खुद का रिडक्शन हुआ है, और अगर क्रोमियम का खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी है दोस्तों. जैसे दो एसिड्स एक साथ रिएक्ट नहीं होते, जो बेस एक साथ रिएक्ट नहीं होता, so therefore whether one is a reducing agent, the other is an oxidizing agent. I am all talking general, my dear friends. Please, okay, don't catch hold of me of certain particular instance, please. Okay, I am talking about all general over here. So in this case, when I talk about chromium का +6 से +3 स्टेट में जा रहा है, so that means उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, एजेंट मीन्स ऑलवेज फॉर अदर्स, ओके, एंड देयरफॉर उस अदर्स के साथ क्या होता है वो शब्द एजेंट के पहले लिख दो, सो दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो +6 स्टेट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट बिकॉज इट हैज अ एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू द +3 स्टेट और द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्वाइट इजीली. Alright, so this was with respect to chromium. हम अब manganese की तरफ जाते हैं. Manganese is going to show a variety of oxidation states, right from +2 से लेकर +7 तक जाता है. Okay, we have compounds like MnCl2. Okay, that is manganese chloride. तो जहाँ पर manganese is going to show a +2 oxidation state. Okay, the +3 and the +5 are समझा ना? Yes. Okay, it's comparatively unstable. +4 का the one of the most important compound of +4 is manganese dioxide. नाम तो सुना होगा. Yes, आपने laboratory में भी देखा होगा MnO2. Okay, तो manganese dioxide में manganese has a charge of +4, so that is +4 state. Okay, one of the most common compounds in this. +6 it forms manganese, K2MnO4. Okay, K2MnO4 is manganate. It is in the +6 state. Okay, +7 permanganate. Everybody knows this. From 11th standard you have been doing it. KMnO4. Okay, potassium permanganate. उसमें कितना charge है उसका? +7. Now this +7 can be easily converted into +2. यानी क्या हो गया उसका? reduction. खुद का reduction. तो दूसरे का क्या? Oxidation. And therefore we say that manganese behaves, this one in the +7 state में it behaves as a very strong oxidizing agent. So +6 and +7 में, okay, chromium in the +6 state and manganese in the +7 state are going to behave as a very good oxidizing agents. Am I clear with all these points? Right. Now we go into the next part, the next series. Okay, FeCONI, CuNO. Now what happens is, okay, we have +2, +3, +4, +5, +6. Okay, we should be expecting, अगर यही दौर चला तो यहाँ पर आना चाहिए था +8, यहाँ पर आना चाहिए था +9, यहाँ पे आना चाहिए था +10. ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट आने चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है दोस्तों. No, it is not coming up. The reasons are, the first reason is the size decreases. Because though I have written it in this way to make you understand the entire table. Okay, this way means what? I have written it in a vertical format. Okay, these are vertical. Lekin in the periodic table, my dear friends, these elements are not vertical. These are horizontal. So they are called as a series from left to right. So जैसे left to right जाएंगे तो size में कमी आती है दोस्तों. There is a decrease in the size. So as we go into the second half of the series, the size goes on decreasing. And if the size goes on decreasing, so it's very obvious the nucleus is having a greater hold on the electrons, and in that situation, if I want to promote the electrons, if I want to bring about a transfer of electrons from one orbital to the another orbital, I require more energy. Okay, I require what? More energy. लेकिन दोस्तों ये लोगों का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रो में मैंने बोला था कि इनके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका हाई होता है एंड दैट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर. लेकिन इन दीज एलिमेंट्स व्हेन वी गो इनटू द लोअर हाफ ऑफ द सीरीज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लेस. It does not provide the sufficient energy which is being required for the promotion of the electrons. Understood this part? And that is the reason that which was being expected कि यहाँ पे +8 होना चाहिए, यहाँ पे +9 होना चाहिए, यहाँ पे +10 होना चाहिए, वो नहीं होता. Okay, because of the reduction in the size, okay, because of more energy required for the promotion of electrons, because the oxidation potential is less, so sufficient energy is not available. So because of these reasons, higher oxidation state यहाँ पर continue हम लोग नहीं कर सकते as we have done it over here. ओके, ये बात आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से. ओके, दूसरा मैंने बोला था द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इन द d ऑर्बिटल, सो द नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग पर्पस आल्सो डिक्रीजेस. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज जब हम आयन के बारे में बात करते हैं, आयन +2 स्टेट इज कॉल्ड एज फेरस.
+3 state it is called as ferric. Okay, +6 state भी दिखाता है वो ferrates बनाता है वो. Okay, it forms what? Ferrates. Okay, +4 and +5. Yes, understood now? Okay, it is comparatively unstable. So +2, +3, +6. These are the states where we have seen compounds of Fe. अब देखिए दोस्तों, इसमें +3 state is more stable as compared to +2. क्यों? Because if I remove this 3 electrons, 2 electrons from 4s, 1 electron from 3d, तो क्या देगा? 3d5, half fill state. यानी +2 state converted into +3 वो ज़्यादा जल्दी होगा, because system always wants to go into the stable state. So +2 to +3 चार्ज बढ़ा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और अगर खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, okay, क्या होता है? रिडक्शन होता है. ओके, और अगर दूसरे का रिडक्शन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. आई गेस द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कब हमें रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है और कब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना है. बराबर है? हाँ बोलिए. यस, यहाँ कानों तक आ रहा है आपका आवाज. यस, अगर दूसरे के साथ जो हो रहा है वो शब्द एजेंट के पहले लिख दो. बस सिंपल, मैं आपको रूल बता रहा हूँ. ओके, ताकि आपको इधर ज्यादा तकलीफ ना हो. ओके, तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें. ओके, दीज आर सम ट्रिक्स विच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दैट यू डोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स. सो दूसरे के साथ जो हो रहा है वो एजेंट के पहले लिखोगे, तो उसके लिए दूसरे के साथ क्या हो रहा है तो पहले देखना पड़ेगा खुद के साथ क्या हो रहा है. ओके, तो खुद के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे के साथ रिडक्शन होगा. एंड देयरफॉर वी से दैट द +2 स्टेट इज अ वेरी गुड oh yes, reducing agent. Understood this? Okay, ये समझा आप लोगों को? So this was about Fe. When you talk about cobalt, nickel, copper, जैसे जैसे और नीचे जाएंगे, नीचे मतलब राइट में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में. ये बोर्ड में हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं, साइज में और कमी आ रही है. Okay, so as a result of which, what happens is more energy is required for promotion, so not available. So therefore all these will show the lower oxidation state of +2, +3 ये दिखाएंगे. Okay, उसमें से भी the +2 states are going to be much more common as compared to the +3 state. आएंगे कॉपर के पास, anomalous behavior है, it is going to show that 4s1 state so that it gets a completely filled 3d orbital. So +1 state is called as cuprous and the +2 state is called as cupric. Okay, +1 is what? Cuprous and the +2 is what? Cupric. Okay, वो दिखाता है. Okay, these are the two oxidation states which are being shown by copper. अब आइए दोस्तों वो एलिमेंट के पास, जी हाँ, जिंक. It shows only one oxidation state and that is +2. So these 2 electrons are being removed, so we get 3d10. So as a result of which, now देखो क्या difference है, because I told you on the basis of oxidation state also I want to tell you something about zinc. Okay, I had given a heading in this video also. Okay, what did I say? What am I going to discuss? Only one property, and that is what? Variable oxidation state. Means one element is going to show more than one oxidation state. और आप देख सकते हो from this particular table कि zinc को छोड़ के all the elements are going to show more than one oxidation state. लेकिन zinc is not showing it. So this is a proof that zinc is not a transition element. इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि variable oxidation state is a property of a transition element. And because zinc is not a transition element, it shows a fixed valency and that is what? +2. ओके, इससे ये भी क्लियर हो जाता है. और इसलिए वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले वीडियोस में, एंड दैट इज कि जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. सो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओके आर नॉट नेसेसरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यस, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. Okay, so zinc shows a fixed oxidation state and that is going to be +2. It's not going to show a variable oxidation state as being shown from scandium to copper. Okay, so I guess this concept is being very clear with all of you, and that is about a concept of variable oxidation state where we say that the elements are going to show more than one oxidation state. Of course, all the oxidation states are not stable. I've already told you this. याद है ना, ये इशारा किया था मैंने. Okay, some of them are stable, some of them are unstable. Okay, or one stable oxidation state also plays a very important role in the coming videos of mine where I'm going to talk about the other properties of transition elements. Okay, ये unstable oxidation state और कैसे कैसे help करता है उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा आपको करते रहूँगा आपके साथ. लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा बोला था ना मैंने, जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आसानी से पता चले कि यस, मेरा नेक्स्ट पार्ट कभी बाहर रिलीज होगा और आपको वो आसानी से समझ में आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस पार्ट ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दिस इज एक्चुअली नाउ द पार्ट 4 of this. Okay, and if you have missed out
please don't worry. In the description box, I'm going to give you the links of the previous 3. So thank you so very much for joining me, and please be updated with my forthcoming videos. Thank you. God bless you all.